disinformation includes spreading fake news and propaganda with the intention of spreading those fake news. Russia Ukraine वाले region में you have the maximum cyber attacks in the last 2-3 years in proxy war. We're talking about since 1970s they planned कि यार 1965 में we lost to India, 1971 में we lost to India, so let's not engage in direct war, let's engage in proxy war, let's take the help of non-state actors, ये जो terrorist organizations हैं उनकी help लेके let's weaken India. So India का pharma sector will be dependent, so ये economic warfare China use कर सकता है. So good morning everyone, my name is Sunil Dagar and this week we'll study a very important topic called hybrid warfare. Now I'm sure all of you have seen this term quite a lot in recent times in the newspaper. In fact, India's defense minister recently talked about the potential dangers of hybrid warfare to India. Clear? So that means this topic, this theme, this word hybrid warfare has been in fashion for quite some time right now. So let's understand what exactly is this hybrid warfare. See, hybrid warfare, also called asymmetric warfare, includes both conventional warfare tactics and unconventional warfare tactics. That means ये traditional tactics of warfare जो normal हमारी war होती थी जिसको हम कहते हैं kinetic warfare. You must have seen your movies like Border and all these war movies. That is traditional conventional form of warfare. Clear? उसमें infantry होगी, cavalry होगी, all these troops movement, there'll be direct confrontation, full scale war. That gets mixed with unconventional tactics also known as non-kinetic warfare. तो ये जो modern warfare है, non-kinetic warfare है, unconventional warfare tactics हैं, now these includes methods where we can achieve our political or strategic objective without resorting to full-scale war. That means now there is no need for full-scale war. We have certain other tools which are unconventional in nature, and these include your cyber warfare. Cyber attack कर दीजिए. Why to engage in full-scale war? Clear? Electronic warfare में now you'll have lasers instead of bullets, right? So laser based guns. इसमें we can also include economic warfare. Let me show you. Economic warfare में sanctions लगा दो country पे, right? Why to directly attack the country? Just weaken the country in other methods. So this will include your regular military forces, special forces, irregular forces. जैसे irregular forces में आपका you must have heard of private army, है ना? US, Russia, all of them employ private army. वो पैसा देते हैं that you can also fight along with the American army, Russian army. Then along with these you have economic warfare. Economic warfare मतलब economic sanction लगा दीजिए, tariff increase कर दीजिए. All of these things are part of economic warfare. Cyber warfare, which includes your cyber attacks. Use of diplomacy to increase a lot of pressure on countries. Psychologically weak करो, उसको break करो. For example, what is happening with Iran, North Korea. Clear? Information warfare. Information, or better word, disinformation. देखो, dis and misinformation are two different terms. Misinformation, MIS, includes spreading fake news without the intention to spread fake news. गलती से आप कई बार forward कर देते हो. So you have spread fake news, but आपका intention नहीं था. But disinformation includes spreading fake news and propaganda with the intention of spreading those fake news. That means you have some evil designs in your mind. कोई political objective है, कोई strategic objective है. That's why you're spreading
disinformation. So this is information warfare. Support of local unrest. So some country, for example, will start supporting some unrest in India. Ki karo protest against the government, right? So there's so many mechanisms of warfare which are present at the behest of the country, in front of the countries. इतने सारे tools हैं. So why to resort to regular military forces? Why to resort to full scale war? ठीक है? Another way to understand hybrid warfare is this. See, there is full scale war जो traditionally 1965 India Pakistan war, 1971 India Pakistan war, 1962 India China war, यहाँ पे peace है. So it's not about peace and war. यही दो options नहीं है. You have other options which include demoralize, destabilize, indirect conflict, intervention, etc. So look at the options that we have. We have media and information operation. Media, social media के through public opinion को change करो, manipulate करो enemy country में लोगों को. That will weaken the state. यहाँ पे कल्चरल सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, अगेन मैनिपुलेशन करिए, पॉलिटिकल सबवर्शन, इन्फिल्ट्रेशन. पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल जो स्टेट है उसमें यू इंट्रोड्यूस सम पीपल हु आर फेवरेबल टुवर्ड्स यू. क्लियर? साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस ऑलरेडी हमने बताया, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करके. सैंक्शंस, इकोनॉमिक कोअर्जन, लॉफेयर. लॉफेयर क्या है? वॉरफेयर यूजिंग लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ को यूज करो इन योर फेवर. So some laws will not be in your favor, हम उसको यूज नहीं करेंगे. China is very good at this, right? They only take those international laws which support China. Otherwise, they don't follow international law. Organized crime, cyber attacks, critical infrastructure attack, low level use of force, proxies. Proxies जैसे non-state actors हैं, है ना? लश्कर-ए-तैयबा, all of them. Terrorists, conventional conflict. So other than conventional conflict, all of these are also included in hybrid warfare. Hybrid is an English word which means mixed. So mixture of warfare tools and tactics are present, and you can use any so to avoid full scale war. The purpose kya hai? Full scale war now. But the reasons why this hybrid warfare is being used, we should ask ourselves कि क्यों यूज हो रहा है in recent times. What are the reasons for increase in the use of hybrid warfare? ऐसी क्या characteristics हैं hybrid warfare की? What are the reasons? So first is ambiguity. Ambiguity मतलब confusion है. For example, there was a cyber attack on India 2019 में कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे cyber attack हुआ, right? To ascertain कि cyber attack कहाँ से हुआ, it becomes very difficult. Clear? And then even if you eventually do reach a point कि ये cyber attack, for example, there's a company North Korea, उसने किया है. Now you cannot attack North Korea, right? So यहाँ पे ये confusion रहता है. Second, threshold of war. Threshold of war का मतलब है normally in traditional warfare, if enemy comes into India and for example unfortunately they shoot people and 100 Indians die. Now Indian government will be very angry, so they will respond with an attack. Just what happened in Operation Sindhu, right? We lost 20 innocent civilians in Pahalgam attack. So traditional warfare में the enemy, the adversary country can attack you. यहाँ पे cyber attack हो गया, fake news spread हो रही है against Indian government, let's say. The Indian government will not know whether we need to attack or not. तो ये जो threshold of war है वो clear ही नहीं है in different tools of hybrid warfare. Understand? Then it provides plausible deniability. अभी हमने देखा हाइब्रिड वॉरफेयर इंक्लूड्स यूज ऑफ प्रॉक्सीज, नॉन स्टेट एक्टर्स. सो इसमें कंट्री बोलेगी वी आर नॉट इन्वॉल्व. दिस इज व्हाट पाकिस्तान डज टू इंडिया. वो कहते हैं ये हमारे लोग नहीं है, वी डोंट नो, मे बी दे आर इंडियंस हु आर अटैकिंग. दिस इज देयर एक्सक्यूज एंड वी हैव प्रूवन सो मेनी टाइम्स दिस इज नॉट ट्रू. 26/11 में thanks to the Havaldar Tukaram, we were able to catch Ajmal Kasab, right? He got martyred, he had to lose his life, and we are very thankful that he caught him. So because we could prove to Pakistan, look, we have your terrorist. उन्होंने बताया कहाँ ट्रेनिंग हुई है, where he was born, which city, everything, right?
That is why you will see 2008 onwards Pakistan was put in grey list of FATF, है ना, उन पे थोड़े sanctions लगना start हुआ था, ठीक है. So plausible deniability दे देता है country को कि हम इससे we are not responsible for this. Cyber attack हुआ है, हमने नहीं किया है. Maybe somebody in our country did that, but it's not the government. So deniability will be given. One example of this is the use by Russia or Russian military of these little green men. So 2014 में when Russia and Ukraine were fighting, Crimea जो peninsula है उसके लिए fight हो रही थी, there were these soldiers that were seen. अब उनके पास Russian guns and all थी, but on their uniform there was nothing Russian. So we did not know, nobody knew कि ये किस country से. Of course they were fighting on behalf of Russia, but in case they were caught doing something which is not acceptable to international media or other countries, so Russia will say these people do not belong to us. Plausible deniability, little green men. Similarly, support. Israel जो है, oh sorry, ईरान जो है support करता है यमन में हाउथी रेबल्स को. So non-state actors को support कर सकते हो. So why Iran needs to fight with Yemen? कोई जरूरत ही नहीं है. Use the tool of non-state actors and start supporting some rebels. A lot of countries have done this. Okay, so these are other reasons. ठीक है, use of non-state actors. What else? Technology. Modern technology like AI, like cyber technology has led to cyber attacks. Cyber warfare होगा. Clear? So all of these enable, अब इतने ज़्यादा cyber space, cyber technologies have developed that countries will say, यार, again, why to engage in full scale war? Directly let's do cyber attack. Cyber warfare में engage करते हैं ना. In any case, जो opposing country है, adversary है, they will not know how to respond. उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमें respond कैसे करना है. Clear? So that is another reason, and that is why you will see Russia, Ukraine वाले region में you have the maximum cyber attacks in the last 2-3 years. World में सबसे ज़्यादा cyber attacks वहीं पे हो रहे हैं because cyber warfare is going on. ठीक है? Enemy में Russia for example will cripple the transportation service. अगर कोई इंडिया पे अटैक करेगा और हमारी मेट्रो सर्विसेज को साइबर अटैक करके दिल ब्लॉक इट समहाउ, या फिर हमारी जो यूजर्स हैं ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर अगर उनको ब्लॉक कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज को हैक कर दिया, देन दैट इज अकॉर्डिंग टू देम अ टूल, अ टैक्टिक यूज्ड इन वॉरफेयर. ठीक है? इमेजिन इफ द ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप्स, इफ कम्युनिकेशन स्टॉप्स, कंट्री विल स्टॉप, कंट्री विल सफर. ठीक है? सो दीज आर सम अदर वेज ऑफ एंगेजिंग इन वॉरफेयर एंड डिसरप्टिंग द एनिमी. Then internet. In the last 2 decades, 3 decades, internet has grown substantially, especially in the developing world. So internet का आप use करिए and you can engage in warfare. For example, election manipulation कर सकते हो. 2006 में there were allegations against Russia of engaging in US election. Clear? जो ट्रम्प वाला इलेक्शन था, this happened back then. There were allegations about that and they used social media. इसको कहते हैं social engineering. Social engineering मतलब users को थोड़ा manipulate करिए, right? Make them think in a way you want them to think. That's called social engineering, the manipulation of mind. So many reasons why hybrid warfare has increased or its usage has increased in recent times. Now, if we talk about the threats to India, because Defense Minister ने clearly बोला है that it poses a lot of threats and dangers to India. Now, the biggest threat comes from Pakistan. Pakistan has been engaging in proxy war. We're talking about since 1970s they planned कि यार 1965 में we lost to India, 1971 में we lost to India, so let's not engage in direct war, let's engage in proxy war, let's take the help of non-state actors, ये जो terrorist organizations हैं उनकी help लेके let's weaken India.
ऑलराइट, सो ये हाइब्रिड वॉरफेयर में एंगेज कर रहे हैं. देन लुक एट चाइना. चाइना has something called 3 warfare strategy. Not just with India, वो 3 warfare strategy follow करती है, which includes psychological warfare. Second, public opinion. और media warfare. And third, legal warfare. So what China does is they will try to break down the enemy psychologically. Disinformation, fake propaganda, manipulation, ये सब use करके, public opinion और media, social media का use करके, they will try to change the opinion both of Chinese as well as outsiders. So Chinese individuals में, for example, they will spread this thing that we are the best country, everything is perfect here. Right? For example, if you Google some information, China mein that information will not be available, right? So there are these restrictions to manage the public opinion. वरना लोग protest कर देंगे. Similarly, China will portray in India, in US, all of these countries that China is the best. Look at China. Look how well they are doing. Right? Clearly, of course, they are doing very well. We're not denying that. But they will present only one sort of picture to change the opinion of the public. And then legal warfare, I already told you, China, for example, uses these convention, कोई 1730 की convention, 1855 की treaty उठा के लाएगा and कहेगा, this belongs to us. This part in India belongs to us. Clear? Now there will be another law which will say, it does not belong to you, China. But China will say, we don't care. हम तो ये वाला law use करेंगे, follow करेंगे. Clear? So China is very particular about these kind of strategy. ठीक है? As a part of this, जो ये तो हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल. इफ यू टॉक अबाउट कन्वेंशनल वॉरफेयर, तो उसमें चाइना फॉलो करता है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी. सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी में चाइना सेज दैट सलामी और इफ यू थिंक ब्रेड, वो कहता है हम पूरा ब्रेड का पैकेट नहीं लेंगे. दैट मीन्स वी विल, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे say that Ladakh belongs to us, right? Or they say Arunachal, they do claim Arunachal belongs to them. So they will say we will not take whole of Arunachal. हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, slices में लेंगे. We will not take the whole salami. We'll take small slices. The benefit of this from Chinese point of view is that enemy will not know, should we now attack them completely? What should we do? Because वो थोड़ा सा एरिया ले रहे हैं, राइट? सो 1 year थोड़ा सा एरिया, देन आफ्टर 3-4 years another area, another area, another area. This is their strategy. They are playing a long-term game, and this salami slicing is part of something known as gray zone warfare. That means a warfare which lies in the gray area. There is peace and there is war, but बीच में lie करता है gray zone. तो चाइना यहां पे रहता है, इंडिया के साथ पीस भी नहीं है, इंडिया के साथ डायरेक्टली वॉर पे भी नहीं है. सो इट कीप्स समवेयर हियर. सो कोलैबोरेट नहीं करेगा इंडिया के साथ, समटाइम्स कॉपरेट, कॉम्प्रोमाइज, कंटेस्ट, कॉन्फ्रंटेशन, कोअर्श, ऑल ऑफ दीज दे विल डू थ्रू द यूज ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर टूल्स. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड ग्रे जोन वॉरफेयर, एंड सलामी स्लाइसिंग is one aspect that China follows of gray zone warfare. So we have neighbors which are using these techniques for us. Then look at the internal security problem. क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने बोला बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वहां पे भी हाइब्रिड वॉरफेयर टूल्स कैन बी यूज्ड. सो वी हैव 3 मेन प्रॉब्लम्स. वी हैव JNK terrorism. Of course, impact of this terrorism is seen in other parts. अभी दिल्ली में हमने रेड फोर्ट ब्लास्ट देखा, unfortunately. So there is terrorism, there is northeast insurgency, and there is left-wing extremism or Naxalism. So these internal security challenges that we are facing, यहाँ पे hybrid warfare tools are being used. These terrorists are now starting to use, for example, fake currency ले आएंगे, economic warfare, right?
So fake currency लाएंगे, that will destabilize. For example, it can lead to inflation, right? Of course, वो fake currency को use करके they will eventually buy the weapons, etc. engage in warfare. Drugs ले आएंगे, cyber attack करना start कर दिया है. Okay, so all of these are the challenges that we are facing when it comes to India's internal security. और क्या threat है? Talking about cyber attack, I already told you 2019 में we had a cyber attack on Kudankulam nuclear power plant. अब देखो, अगर डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, ऑफ कोर्स बोथ द कंट्रीज लूज देयर पीपल, मार्टर होते हैं, शहीद होते हैं बहुत इंडियंस, एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग. यहां पे सोचिए, इफ कंट्रीज start doing cyber attacks on these critical infrastructure. Nuclear power plant is a critical infrastructure which is critical for the survival, sustenance and working of an economy. ठीक है, तो आपके जो डैम्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मेट्रो है, ऑल ऑफ दीज, अगर यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पे साइबर अटैक किया, उन्होंने हैक किया, एंड इफ दे आर एबल टू समहाउ क्रिएट एन एक्सप्लोजन ओवर देयर, कैन यू इमेजिन हाउ मेनी पीपल विल लूज देयर लाइव्स? दैट इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर वी आर लुकिंग एट. ठीक है, सो ये डिफेंस मिनिस्टर इज सेइंग वी नीड टू थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वॉरफेयर. अब हमें हाइब्रिड वॉरफेयर को इन टोटलिटी वी नीड टू एड्रेस, both for defensive purpose and for offensive purpose. Clear? So this is another issue. Then I talked about another threat, economic warfare. अभी आप देख रहे हो, tariffs on India are impacting the exporters so much. ठीक है, but यहां पे we'll talk about China for example. अब China has monopoly on so many things. जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट पे मोनोपोली है, तो उसकी सप्लाई चेन, जो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, कोविड में इफ यू हैड टू बुक कार्स फॉर एग्जांपल 2020-21, तो कार लेने के लिए यू हैड टू वेट फॉर 1 year 1.5 year. इतना ज्यादा टाइम पीरियड हो गया. क्यों? बिकॉज चाइना हैज दीज चिप्स, दे कर्टेल्ड द सप्लाई ऑफ दीज चिप्स. सो ये जो सप्लाई चेन डिपेंडेंसी हमारी है, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल द कंट्रीज ऑन चाइना, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. सिमिलरली जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, एपीआईज, आपके ड्रग्स में, ड्रग्स एज इन मेडिसिन में, फार्मा में, जो थेरेप्यूटिकल इफेक्ट होता है, पैरासीटामोल फॉर एग्जांपल इज एन एपीआई, ये भी चाइना डोमिनेट करता है. सो इंडिया का फार्मा सेक्टर विल बी डिपेंडेंट. सो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर चाइना यूज कर सकता है, और दे कैन डंप, दे कैन डू टैरिफ्स, दे कैन डू सैंक्शंस. यूएसए फॉर एग्जांपल has put a lot of sanctions on Iran because they are developing nuclear power plant. So that is a form of economic warfare. So why to engage in traditional warfare? So these are some of the threats that we need to focus on. Okay, and if we talk about why this is being used, we have these characteristics of hybrid warfare. Now, if we talk about the steps that India has taken for this, because this is a fairly recent term, hybrid warfare, not a lot of people would know about this, but the Indian government is well prepared to deal with this. So we have something known as Durga project. ठीक है, हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज ग्रो कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, आई टोल्ड यू दिस टर्म, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मीन्स वॉरफेयर विच यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गामा, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऑल ऑफ दीज, लेजर, तो उसमें एक एग्जांपल होता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. ये जो लेजर बेस्ड वेपन्स हैं, फॉर एग्जांपल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ड्यू, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड अ डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे प्रोजेक्ट. बेसिकली इस तरह का, दिस इज योर दुर्गा 2 बीइंग टेस्टेड. ठीक है, लेजर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के थ्रू द वॉरफेयर विल बी देयर इन द फ्यूचर, समथिंग दैट यू सी इन योर मूवीज लाइक स्टार वॉर्स एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज पोटेंशियली द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर. सेकेंडली, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, जैसे मिलिट्री इंटीग्रेशन. अब मिलिट्री में यू हैव आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ट्राई टू इंटीग्रेट दैट, एंड वी हैव डन दिस. 2020 में वी हैड फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर और जनरल बिपिन रावत, आर्मी हेड थे ये 2020 में ही बिकेम
the first CDS of India. Unfortunately, he got martyred. We lost him in a helicopter crash. Then we have Defense AI Project Agency, Defense AI Council. यहाँ पे भी all three wings of the military come together and they work on AI technologies. Similarly, cyber related we have Defense Cyber Agency. Again, यहाँ पे cyber attacks में defensive and offensive purpose के लिए we have Defense Cyber Agency. ठीक है, 2021 में फॉर्म हुआ था. अगेन दिस इज अ ट्राई सर्विस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. इंटरनेशनल पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, जैसे यूएस के साथ वी हैव डन जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट. ठीक है जी, सोमिया विद यूएस. ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है मिलिट्री की, दैट कैन बी शेयर्ड. तो अगर कोई साइबर अटैक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एनी हेल्प, एनी कम्युनिकेशन, एनी कोलैबोरेशन इज नीडेड, सो वी हैव साइंड सच अग्रीमेंट्स. ये बहुत पहले अर्ली 2000 में ही हो गया था. एंड देन रिसेंट ईयर्स में वी हैव मेड क्वाड. ठीक है, जो 4 कंट्रीज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, दे हैव कम टुगेदर. द आइडिया इज टू काउंटर चाइना. तो यहां पे जो कोलैबोरेशन है, इट्स नॉट ओनली जस्ट मिलिट्री, ट्रेडिशनल मिलिट्री, यहां पे मॉडर्न वॉरफेयर लाइक साइबर वॉरफेयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, पार्लियामेंट्री रिव्यूज 2024 में डिफेंस की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इट सेड विल डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू हाइब्रिड वॉरफेयर लाइक साइबर डिफेंस, एंटी ड्रोन. अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, ड्रोन वॉरफेयर हुआ था, दैट इज टाइप ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर. इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस सिस्टम्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड. योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग टूल्स, ये सब ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री इज इनकॉर्पोरेटेड. ओके, and what do we need to do further along with these steps? We need to, देखो, because technology is building the future of warfare, so we need to do capacity building. किसकी? Armed personnel की, so that they know how to manage these advanced technologies. Cyber retaliation कैसे करना है, all of these we need. Secondly, integrate करिए hybrid warfare को in adaptive defensive strategy. That means you can create a separate division related to hybrid warfare, because hybrid warfare में you have, for example, electronic warfare. तो Ministry of Electronics and IT भी involved है. You have technologies, science and technology, Ministry of Science and Technology भी involved है. Internal security problem, Ministry of Home Affairs. Border है, defense है, Ministry of Defense. Overall PMO, Prime Minister's Office. So many ministries होंगी. वो कह रहे हैं नहीं, आप एक काम करो, try to make a dedicated division of hybrid warfare. Ideally it could be done in PMO, right? ताकि इसमें इंटर मिनिस्टीरियल जो इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट. सेकेंडली, रिएक्टिव अप्रोच मत यूज करो. अटैक हो गया, नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू. यूज प्रोएक्टिव अप्रोच. प्रोएक्टिव अप्रोच में फॉर एग्जांपल वी कैन यूज डिप्लोमैटिक चैनल्स. ट्रैक टू चैनल यूज करो. ट्रैक 1 होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 2 होता है नॉन स्टेट एनजीओज, उनके थ्रू ट्राई टू रिजॉल्व सम इश्यूज. ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर टूल्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टूल्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, पॉलिटिकल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ दीज शुड बी इंटीग्रेटेड टू हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच. प्रोएक्टिव होता है बी रेडी इन केस समबडी अटैक्स. तो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं, एंड इफ समबडी इज नॉट, वो सुन नहीं रहा है, परेशान कर रहा है, ट्रबलिंग अस, अटैकिंग अस, देन यू कैन हैव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एज वेल. एंड देन something last is whole of government approach. Basically ये जो term है whole of government, it says, देखो, it's not only responsible of the central government only or a particular ministry in the government or a particular department. नहीं, ये बहुत बड़ी problem है. So it requires whole of government, central government, state government, local government, central government में all the ministries etc. ठीक है, so coordinated एक plan हमें बनाना है जिसमें सारी ministries, departments होंगी, which can be designed by our National Security Council Secretariat, which is headed by NSA. Mr. Ajit Doval हैं अभी National Security Advisor, so he can take a lead and we can take consent of Cabinet Committee on Security. Cabinet Committee on Security होती है जिसमें हमारे Prime Minister and 4 important Cabinet Minister involved होते हैं ना, Home, Defense, Finance, ये वाले External Affairs. So integration needs to be done in terms of decision making. So this is very, very important for us to start working on hybrid warfare. 10 years, 20 years later, आप देखेंगे ये new forms of warfare में लड़ाई हो रही है, battle हो रही है. Okay? This is something that we already witnessed slightly in Operation Sindoor. जो drone warfare हुआ था, right? Cyber attacks is also part of ongoing Russia-Ukraine, for example. So that is something we need to keep in mind. So this is hybrid warfare. Keep an eye on this term in newspaper and be prepared. Okay.
That's it, and see you next time.